गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ तरुण फ्रॉम मार्क्स चंडीगढ़ आईएएस। तो आज हम फिर से ले आए हैं हमारा करंट अफेयर सेशन जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, सॉरी फॉर द डिले टुडे बिकॉज ऑफ ड्यू टू अनफोर्सिन कंडीशन ये डिले हो गया है फॉर एन आवर, बट हम कंटिन्यू करेंगे हमारे करंट अफेयर्स के सेशन से। ठीक है, तो चलिए। सो व्हाट इज टुडेस फर्स्ट न्यूज? तो पहला न्यूज इज वर्ल्ड फूड प्राइसेस is at 2-year high on rising of meat and edible oil, ऐसे FAO ने बोला है। तो हमारे लिए FAO इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर आवर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, और एक वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स क्या होता है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। ठीक, तो लेट अस सी FAO का फूड प्राइस इंडेक्स। तो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO ने ये इंडेक्स निकाला है टू मेजर द प्राइसेस ऑफ इंटरनेशनल बास्केट। तो इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? 5 चीजें इंक्लूडेड। वी हैव टू रिमेंबर देयर आर 5 थिंग्स। फर्स्ट इज सीरियल, सेकंड इज वेजिटेबल, डेयरी, मीट एंड शुगर। सो व्हाट आर 5 थिंग्स? सीरियल, वेजिटेबल, डेयरी, मीट एंड शुगर। ठीक है, और इसका वेटेड एवरेज विद एक्सपोर्ट शेयर में दिया जाता है। ऑलवेज रिमेंबर एक्सपोर्ट शेयर में। एंड इसका बेस ईयर इज 2014 टू 2016। 2014-16 इसका बेस ईयर है। नाउ व्हाट आर द की फैक्ट्स अबाउट FAO? जैसे FAO फूड प्राइस इंडेक्स के बारे में हमने देख लिया, अब FAO क्या है उसके बारे में जानते हैं। राइट, इट इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन। ऑलवेज रिमेंबर स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन का। द गोल इज टू अचीव फूड सिक्योरिटी फॉर ऑल एंड मेक श्योर पीपल हैव रेगुलर एक्सेस। वही कि फूड सिक्योरिटी मिलना चाहिए और रेगुलर एक्सेस मिलना चाहिए लोगों को, यही इनका गोल है। मेंबर्स कंसिस्ट ऑफ 195 मेंबर्स, उसमें 194 आर द कंट्रीज and one is European Union. So always remember European Union भी इसका पार्ट है। जैसे वर्ल्ड बैंक की सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन से उसी तरह there are sister bodies of FAO too, that is World Food Program and other is International Fund for Agricultural Development. ये दो सिस्टर bodies है of FAO. We have to remember and memorize it. Now there are multiple reports that is published by FAO and reports के ऊपर क्वेश्चन UPSC पूछता है या फिर स्टेट PCS भी पूछता है, स्पेशली ऑफ FAO, IMF एंड वर्ल्ड बैंक। इन तीन के रिपोर्ट्स हमें अच्छे से याद रखने हैं, राइट? तो लेट अस सी व्हाट आर द रिपोर्ट्स ऑफ FAO। स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट, द स्टेट ऑफ फॉरेस्ट फिशरीज, वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, दैट इज सोफिया, स्टेट ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटी मार्केट्स, सोफो, and the state of food security and nutrition in the world. Now FAO का headquarters किधर है? We have to remember it is in Rome, Italy, right? So let us try this question. You consider the following statement regarding FAO food price index. Whenever you are watching the video, after the news is completed and when I am asking this sort of questions, try to pause the video for a second, just read, go through with the questions कि क्या हो सकता है, ready the answer, and then watch my video again where I will be explaining it again. Okay? So it is released by United Nations FAO on a monthly basis. Yes, it is true. It is released on a monthly basis. The measures of the monthly change in the international prices of a basket of food commodities, including cereals, vegetable oil, dairy, meat, and sugar. Yes, all these are the 5 commodities: 1, 2, 3, 4, and 5. The index is calculated on nominal terms and is not adjusted for inflation. It's true. I haven't explained this, but this statement true है. It is calculated on the nominal basis and not the inflation adjusted value, that is the real value. उस पे नहीं होता है, उसको भी calculate करते हैं, but initially it is in the nominal terms itself. And India is member of FAO and helps in compiling the index. Is true. So all statement over here is true. The answer here would be D. See, all the statements are true. Now the next news is related to ASEAN. So ASEAN becomes important कि ASEAN क्या है, उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, उसमें कंट्रीज कौन सी है, राइट? बिकॉज वेरियस ऑर्गेनाइजेशन लाइक ब्रिक्स, ASEAN, G20 ग्रुप, इन पे UPSC ने क्वेश्चन पूछा है एंड स्टेट PCS भी पूछता रहता है। इफ यू गो थ्रू PYQs, आपको पता चलेगा कि there has been consistently questions on this organization in one way or the other. So organizations become essential part. और जब हम ऐसे करंट अफेयर्स करते रहते हैं तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कभी ना कभी कोई ग्रुप न्यूज़ में आएगा एंड विल कवर इट वन बाय वन. सो यू जस्ट हैव टू मेमोराइज इट एंड ट्राई टू मेक नोट्स आउट ऑफ इट. अगर आपने नोट्स क्रिएट कर दिया दैट वुड बी लास्टिंग इंपैक्ट फॉर यू, क्योंकि आप उसको बार-बार रिवाइज कर पाओगे. एंड रिवीजन इज की.
in UPSC. You have to make one good notes and you have to trust on that notes. And उसको आपको multiple time पढ़ना है rather than reading multiple sources, right? Because reading multiple sources will give you थोड़ा थोड़ा knowledge of everything. It won't last long in your memory. But if you have one good notes and you are revising it again and again, that pictographic memory is created in your brain and that lasts very long. चलिए तो what are the ASEAN member countries? First thing, it is Myanmar, Thailand, Cambodia, Singapore, Indonesia, Malaysia, Vietnam, Laos, Philippines, and Brunei. There are 10 countries. You have to remember Southeast Asian countries are सारे. So they are the part of ASEAN group. So what is ASEAN first of all? ASEAN is Association of Southeast Asian Nations. Regional grouping है obviously to promote economic and security cooperation. We have seen all the 10 countries, that is Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand and Vietnam. Now establishment. ये कब establish हुआ, कौन सा declaration था, what are the members, we have to read about them. So first, what is the establishment? It was established on 8th of August 1967 in Bangkok. इसके लिए इसको Bangkok Declaration भी बोला जाता है क्योंकि वहां पे साइनिंग हुआ था बैंकॉक इन थाईलैंड. नाउ तो इनिशियल फाउंडिंग मेंबर्स कौन थे? वी हैव टू रिमेंबर दिस थिंग. यस, फाउंडिंग फादर्स ऑफ आसियान कौन थे? देयर वर 5 कंट्रीज, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड. थाईलैंड जिस कंट्री में हुआ वो वैसे याद रखो, एक बैंकॉक डिक्लेरेशन से. एंड रिमेनिंग 4 वर सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया एंड Philippines. You can remember by SIM-T. SIM-T. Right? Now, the aim. The motto of ASEAN is one vision, one identity, one community. Yes? जैसे हम साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को भी एक ग्रुप में ही रखते हैं, उस तरीके से इन्होंने भी एक मोटो रखा है, वन विजन, वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी. Secretariat is in Jakarta of Indonesia. It has a total population of approximately 660 million people and combined GDP is of 3.2 trillion as of 2022. ठीक है, अब आगे जानते हैं और आसियान के बारे में कि how did ASEAN originate and evolve. तो पहले ही 1961 एक एसोसिएशन हुआ था, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया. इसमें अगेन इट वाज फॉर्म बाय मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड. और इन्हीं ने बाद में 67 में जाके फॉर्मली आसियान को एस्टैब्लिश किया था वाया बैंकॉक डिक्लेरेशन. नाउ इसमें हमें दो तीन ट्रीटीज या कमिटमेंट्स के बारे में जानना है. द फर्स्ट वन इंपॉर्टेंट फॉर अस इज आसियान फ्री ट्रेड एरिया, जो 1992 में क्रिएट किया गया था टू क्रिएट अ फ्री ट्रेड एरिया अमंग मेंबर नेशंस. ठीक है. देन देयर वाज अनदर इंपॉर्टेंट, आसियान ने ज्वाइन किया था रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जो 2020 में बहुत न्यूज में था बिकॉज इंडिया ने इसको ज्वाइन नहीं किया था. ऑन द अदर हैंड ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इन सब ने इसको ज्वाइन किया था आरसीईपी को. द मेन इशू वाज, बोन ऑफ कंटेंशन वाज एग्रीकल्चरल ट्रेड के ऊपर, एग्री प्लस डेयरी. ये इंडस्ट्री वाला वाज द बोन ऑफ कंटेंशन फ्रॉम इंडिया. इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा यही इंडस्ट्री है जहां पे इंडिया हमेशा से फोकस करता है नॉट टू इन्वॉल्व द फॉरेन प्लेयर्स बिकॉज इट विल क्रिएट burden on our farmer as बाहर का प्रोडक्ट will come to India at a cheaper cost which will harm our industry of agriculture and dairy. And already we have made a goal of doubling farmers income जो अब तक हमने अचीव नहीं किया है, तो वो इसको भी हैम्पर करेगा. रिसेंटली जो इंडिया यूएस का ट्रेड टॉक होता है उसमें भी बोन ऑफ कंटेंशन वाला एग्रीकल्चर अगेन एंड डेयरी इंडस्ट्री. So ASEAN is member of RCEP, a free trade agreement. You have to remember that. Now try this question, pause the video, try it for once and just let me know in the comment section कि आपने आंसर क्या किया है. Just mention the question number, like this is question number 2, next topic का question number 3 and उसके आगे आंसर बता दीजिए. So there would be accountability कि आपने भी सही से किया नहीं किया and this will create impact. क्योंकि जब आप गलत करते हो, if you make a mistake in any question, that mistake will be remembered by you. करेक्ट क्वेश्चन आप इतना याद नहीं रख पाओगे, लेकिन जिधर आप गलती करोगे वो याद रहेगा, यस मैंने ये स्टेटमेंट में एरर किया था while I was preparing or while I was studying. चलो, what
Consider the following statement regarding ASEAN. ASEAN Secretariat is located in Jakarta, Indonesia. ASEAN Summit is the highest policy-making body of the association. India is a founding member of ASEAN. क्या ये true है? नहीं, ये गलत है. So this and this two statement gets eliminated. By default we understand 2 and 4 तो सही है. क्या? Fourth is the ASEAN Charter came into force in 2008. In organization or legal personality. This is true. Answer here would be A. As we all know, इसका secretariat is located in Jakarta, Indonesia. Right? So the answer is A. Sure. Now let us move forward. It's regarding lion conservation. India has set an example in lion conservation. ऐसा हमारे मिनिस्ट्री MOAFCC ने बोला है. तो हमें क्या याद रखना है? We have to study about Asiatic lion. First of all, there are two types of lion, Asiatic and African. दोनों के फीचर्स में क्या डिफरेंस है ये हमें पढ़ना पड़ेगा. इंडिया में एशियाटिक लायन कहाँ मिलता है? What is the location associated with them? We have to study that, right? Location is important. किस location में मिलता है? And along with that, if any community is involved in its protection, like in Gujarat, there is a Malghari community. As you can see, they have helped very much in protecting the lion's population. They live in a state of mutualism. जो environmental ecological term है mutualism, when two species stay together and benefit each other by providing the resources to each other, right? Sure. तो आइए जानते हैं about Asiatic lion. So Asiatic lion is also known as Persian lion or Indian lion, and it belongs to subspecies of Panthera leoparsica. African lion है ये और उसका subspecies माना गया है Indian lion को. Right? It is found exclusively, very important term, exclusively in India, specifically in Gir National Park and Wildlife Sanctuary in Gujarat. Right? अब ऐसा चल रहा है कि इंडिया गुजरात के बाहर भी हम लायंस को भेजे in their natural state, not in zoo or some sort of captivity, but in their natural state गुजरात के बाहर भी भेजे, so that in case कभी कोई वायरस से अटैक होता है या कोई बीमारी फैलती है, like some disease, some sort of diseases are spreading among the species, तो हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे एक सेल के स्पीशीज. Like in, if I am not wrong, in 2022 DMP हुआ था. DMP, sorry, डिस्टेंबर वायरस था एक जिसने अटैक किया था लायन के पॉपुलेशन को. ऑलमोस्ट 40 to 50 लायंस वर किल्ड बिकॉज़ ऑफ दिस वायरस इन गुजरात, गिर जंगल, राइट? चलो, so once widespread, it was once spread across West Asia and Middle East, but now they are extinct in this region, and India is the last refugee of this species. So India में exclusively मिलता है, as we have read. Current distribution, the latest census of 2020 by Gujarat Forest ने बताया था, it records 674 lions spread across 30,000 square kilometer in 9 districts in Saurashtra. पहले इसका IUCN status था endangered, but now it has been changed to vulnerable in 2025 because of the improving status and the population number of the Asiatic lion. वही हमने पढ़ा था कि इंडिया है, न्यूज़ भी उसी के रिगार्डिंग है कि इंडिया has set an example in lion conservation. Now let us see what is the difference between Asiatic lion and African lion, right? Now Asiatic lion is slightly smaller and it is generally larger. African lion main basically जो hairs होते हैं shorter होते हैं और less developed होते हैं. ये fuller होते हैं और denser mane होता है. Males usually stay in pride. Males leave pride unless mating or for killing. ठीक है? तो इधर males stay with the pride, group में रहते हैं. Habitat dry deciduous forest, India only, सिर्फ इंडिया में मिलते हैं. ये savannas में ज़्यादा मिलते हैं, shrubland and deserts of Africa. ठीक है? It is not restricted to any one country. It is found in Africa, in multiple countries. Distribution exclusively to Gir Gujarat, widespread in sub-Saharan Africa. दोनों का IUCN स्टेटस वल्नरेबल है, ये आपको याद रखना है, दोनों वल्नरेबल है. साइट्स में अपेंडिक्स 1 में है, ये अपेंडिक्स 2 में है. प्रोटेक्शन इन इंडिया WPA के अंदर आता है ये,
वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 उसके शेड्यूल 1 में ये इंडिया में मिलता ही नहीं, सो देयर इज नो डब्ल्यूपीए फॉर इट. एंड व्हाट आर द मेजर थ्रेट्स? इधर हंटिंग लॉस एंड कॉन्फ्लिक्ट है फॉर अफ्रीकन लैंड्स, एंड इधर इनब्रीडिंग, यस, डिजीजेस, हैबिटेट लॉस एंड ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट इन केस ऑफ एशियाटिक लायन. अब जानते हैं कि गिर के बारे में, वेयर दे आर फाउंड, राइट? गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क जो है, तो इट इज एस्टैब्लिश्ड इन 1965 with an additional buffer zone of 470 kilometer. We don't need to remember the numbers, but it was created in 1965. That we have to remember. Girnar Wildlife Sanctuary is also part of it. Was established in 2008, and it is located in Junagadh district and covers Girnar Hills and Saurashtra region. It comprises of dry deciduous forest, obviously. और वहाँ पे क्या-क्या species मिल सकते हैं? Dry region के हिसाब से हमें याद रखना है. There would be acacia, right? Teak. And fauna जो बहुत सारे हैं, like leopards, चिंकारा, चौसिंगा, Asiatic lion. These are the primary important species that is found. Right? Now the Girnar Sanctuary function as the extension habitat for lions beyond Gir National Park. तो Gir Sanctuary भी है. Now try to attempt this question. This is UPSC question to the PYQ of 2019. इसमें Asiatic lion के बारे में भी पूछा था. This was species based question. Try to attempt the question. Asiatic lion is naturally found in India only. This is true. Though it is extreme statement, but हमें याद है कि Asiatic lion is exclusively found in India, right? We have studied this. So this statement is true. So B options get eliminated. Double hump camel is naturally found in India only. नहीं. इंडिया में बहुत कम मिलते हैं in northern states of J&K and Ladakh, but it is mostly naturally found in Central Asian countries, that is Kazakhstan, Mongolia. In those countries it is found in the larger number, right? So this statement is wrong. And one-horned rhinoceros is naturally found in India only. Again, only we have to be careful over here. Only आया है फिर से. क्या rhinoceros सिर्फ इंडिया में मिलता है? नहीं. It is found in Nepal, few parts of Bhutan. Yes, it is found in multiple countries. So answer here would be A. These five. See, Nepal, smaller numbers in Bhutan. And double hump camel is naturally found in India. Incorrect, because it is found in wild, mainly in Mongolia and China, in the Gobi Desert region. In India, it is found only in small numbers in Ladakh, but not exclusively. Right? So let us see the next important news. So malnutrition claims lies in Sudan's El Fasher. तो लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन यूपीएससी में नंबर ऑफ लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन हैव राइज इन लास्ट 2 to 3 years, राइट? एक्सपोनेंशियली ग्रो हुआ है, स्पेशली फ्रॉम 2023. ठीक है, ऑलमोस्ट 4 to 5 ऑड क्वेश्चंस इन यूपीएससी प्रीलिम्स दे आस्क फ्रॉम लोकेशन बेस्ड. और इस तरीके की सिटीज को या जगह को जिधर माल न्यूट्रिशन या एथनिक कॉन्फ्लिक्ट या फिर इफ देयर इज एनी कू, मिलिट्री कू और समथिंग लाइक दैट, उन लोकेशंस पे ज्यादा फोकस रहता है यूपीएससी का. सो वी हैव टू रिमेंबर अल फशर और अल फशीर. देयर इज टू वे टू प्रोनाउंस इट. इट इज अल फशीर और अल फशर. इट इज इन सूडान. वी हैव टू रिमेंबर. नाउ लेट अस सी रिगार्डिंग द सूडान और क्या-क्या है. दिस इज द मैप ऑफ सूडान, राइट? इट लाइज इन नॉर्थ दारफुर रीजन ऑफ in the North Darfur province, right? Al Fasher lies in North Darfur. So remember, Darfur is also in Sudan. अगर दारफुर पूछ गया तो भी हम ध्यान रखते हैं सूडान में ही लाई करता है. दारफुर का भी 3-4 पार्ट है. There is west, central, south and eastern. We have to remember few places also. One is El Janina, Zarinji, Nyala and El Daim. We have to remember these names. Try to remember. I know it's difficult, but we have to remember. And we have to remember Al Fasher and Khartoum. This Khartoum is the capital of Sudan. So Khartoum, we have to remember this also. And Sudan में from quite a while now, there has been instability because of conflicts with various regions. South Sudan के साथ तो चल ही रहा है इधर. Then on the western part they have issues for the Darfur region का, and in the eastern they have conflict over here also, and internally also they have issues because now military has taken over from for quite a while in Sudan,
So there is a lot of instability in this region. So what is Darfur region in Western Sudan? It lies between Kordofan in the east and Wadai in the west, and extended southwards to Al Ghazal or Ghazili River, and northward towards Libyan Desert. Okay? It has a very large area, immense rolling plain that has an area approximately of 440,000 square kilometers. Volcanic highlands of Mara Mountains are also found. So Mara Mountains, again we have to remember, lies in Darfur region of Sudan. Mara Mountains. Darfur was independent sultanate until it was annexed by Sudan in 1916. So Darfur पहले एक independent sultanate के अंदर था until and unless it was annexed by Sudan in 1916. The name Darfur is derived from Dar fur, meaning the land of fur in Arabic. So try to attempt this question again. UPSC PYQ है ये भी. Try to attempt it. So Chechnya, Russian Federation, it is true. This statement is correct. So these options get eliminated. Always try to eliminate the option that would help you to reach the answer fast. Now Darfur in Mali, is it? No. Because we have studied just right now कि ये सूडान में है and not in Mali. So option 2 gets eliminated over here. Now we are left in A and C. Swat Valley in Iraq? No, it lies in Pakistan. Balochistan region of Pakistan. It was in news during that time. And so answer here will be A. Let us see. The Russian Federation, yes, Chechnya is federal subject of Russia, often seen its use due to separatist movements and conflicts. जैसे मैंने बोला था कि कहीं भी conflict या फिर separatist movement या coup होता है तो वो UPSC पूछता है. This is the prime example of it. Again, Darfur is a region in West Sudan, not Mali. We have studied about it. Iraq, Swat Valley in Khyber Pakhtunkhwa. Sorry, not in Balochistan. Khyber Pakhtunkhwa province of Pakistan, and not Iraq. Right? Sure. Now the next news is regarding the conflict of Armenia and Azerbaijan. जिसको broker किया again Donald Trump ने for temporary period. Let's see how it lasts. Armenians caught between the hope and distrust after accord with अजरबैजान. तो एक अकॉर्ड साइन किया गया बिटवीन आर्मेनिया एंड अजरबैजान. तो हमें जानना है कि वो कॉन्फ्लिक्ट किस वजह से था या कौन से रीजन को लेकर था. सो अगेन प्लेसेस इन न्यूज़ के पर्सपेक्टिव से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये आर्मेनिया अजरबैजान. क्यों इंपॉर्टेंट है, कहाँ लोकेटेड है, वेयर दे लाई, व्हाट वाज द रीजन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन देम, and how it has changed the situation in that place, right? So let us see. So the conflict was all about Nagorno-Karabakh region, right? It lies in Azerbaijan. Azerbaijan का capital is Baku and Armenia का capital is Yerevan. You have to remember this. As we have studied, Caspian Sea के जो bordering countries हैं, they are Tali, mnemonic. So one of them is Azerbaijan. So we have to remember Azerbaijan shares its boundary with Caspian Sea, right? And not with Turkey. But always remember Azerbaijan, though we can see that Azerbaijan is not connected to Turkey, it is connected via this small landmass over here. There is a country, a part of Azerbaijan lying away from Azerbaijan. In between there is Armenia too, right? So what was the conflict about? We have to understand that. So the reason was there is a place called Nagorno-Karabakh in Azerbaijan, which is part of Azerbaijan, but most of the population are Armenian Christians. Most of the population is Armenian Christian lying in this region, almost 60 to 70%. So that is the bone of contention between both of them. Armenia is claiming give this part to us as most of the people belong to our country, but our community, because they are Christian. Armenia is a Christian dominated country, that is Catholic, and Azerbaijan is Islamic state, right? So this is the bone of contention between the both of them.
Along with it, you have to remember one more thing. There is a Lachin corridor. I am writing over here. Lachin corridor. You have to remember this place too. Lachin corridor. It is a corridor that is connecting the Nagorno-Karabakh region with the Armenian part over here. This part, right? Schedule. Let us understand about Nagorno-Karabakh. This also refers to as Artsakh. Artsakh. So if UPSC or State PCS ask about Artsakh, remember that is Nagorno-Karabakh itself. It is Artsakh called by Armenians. Armenians called it Artsakh, not Nagorno-Karabakh region. It is a landlocked between mountainous region in the South Caucasus. General region include northeastern flank of Kabarnak range of Lesser Caucasus and extend to the crestline of Kura river. So we have to remember the Kura river at its foot. ये environment steppe है on the Kura lowland or dense forest of oak, hornbeam and beech are found. Following the Russian Empire's collapse in 1917, both Armenia and Azerbaijan asserted claims over this region, leading to enduring tension. So ये tension है 1917 से ही, जब रशियन एम्पायर का कोलैप्स हुआ था आफ्टर द ज़ार्स और जो सोशलिस्ट गवर्नमेंट आई. आफ्टर दैट द इशू स्टार्टेड विद आर्मेनियन एंड अजरबैजान क्लेम देयर इंडिपेंडेंस एंड उसके बाद उन्होंने क्लेम करना शुरू कर दिया था ऑन दैट रीजन. Internationally, it is recognized as a part of Azerbaijan, as we have discussed already. Until recently, much of it was governed by unrecognized Nagorno-Karabakh Republic, also known as Republic of Artsakh. Okay. Historically, the region's population was ethnic Armenian, yes, and it operated as self-established government closely aligned with Armenia, though lacking official recognition from the Armenia and other United Nations members. ठीक है, तो लोकल गवर्नमेंट ही रहेगा ऑब्वियसली एंड सेल्फ एस्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट रहेगा ऑफ एथनिक आर्मेनियन कम्युनिटी. नाउ मेक अ PYQ. Try to attend this question. Now see, in this type of question you got to be smart, right? आपको कुछ नहीं पता. Let's assume you don't know anything. It is Zaporizhia. Sorry, it would be Zaporizhia here. Now let us say you don't know anything, but you know Nagorno-Karabakh is in Armenia and Azerbaijan. तो इसका ऑप्शन ये है, तो एटलीस्ट यू कुड हैव गेस्ड कि ये शायद ये हो सकता है, नॉट नेसेसरी हो, बट बोथ आर इनकरेक्ट. ये कंफर्म हो गया, तो 2 आर एलिमिनेटेड फ्रॉम दिस. So B and C gets eliminated as per this. Now Kherson and Zaporizhia वो टाइम बहुत न्यूज़ में था because it was dispute. It is a city of Ukraine जहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट था जिस पे अटैक किया था रशियन फोर्सेस ने, राइट? So that was in news. So this statement is also wrong. So answer here would be D. Done. Let us see about them. North Kivu and Ituri is a province in Democratic Republic of Congo, that is Central African country of DRC. जहाँ पे often in news due to conflicts involving rebel groups like M23 and again conflict वाला region. तो फिर से क्वेश्चन आ गया PYQ में. Same goes for Nagorno-Karabakh. ये भी conflict वाला region है. It is in Armenia, Azerbaijan, as we have studied. And now Kherson and Zaporizhia, dispute between Israel and Lebanon. No. These are the regions in Ukraine in news due to the Russia-Ukraine war and not Israel-Lebanon dispute. Again, war, conflicts, coup. This all are important for UPSC's perspective, right? चलिए, अब अगले न्यूज़ पे आते हैं. There was an image, but यहाँ पे एक नाम आ गया था Lake Balkash. So this place again becomes important for our examination. Lake Balkash. तो Lake Balkash है कहाँ? वो हमें जानना है. And what are its features, right? So Lake Balkash is in Kazakhstan, right? It is drained by 2 rivers, Karathal River and Ili River. Okay. Now let us see what are the other features. It is situated in the southeastern Kazakhstan of Central Asia, lies in Balkash Arapul Basin bordered by Kazakh steppe.
तो स्टेपीज जो होता है, they are called the bread basket of the world. There are few other places also that we have to remember along with it, like prairies in North America, mostly in USA. Then there is pampas in Argentina, and there is belts in South Africa, Canterbury in New Zealand, and along with it we have few more like pustas in Hungary, right, and downs, DWNS in Downs, sorry, in Australia. ठीक है, these are few places जहाँ बहुत ज़्यादा agricultural growth है, and they have commercial agricultural practices in this region. So prairies in North America, pampas in Argentina, belts in South Africa, Canterbury in New Zealand, steppes in Eurasia, right? Pustas in Hungary and downs in Australia. Try to note it down and memorize it. Now, where were we regarding the Lake Balkash? It is one of the largest lake in Asia with an area of approximately 16,000 square kilometer. It is a unique characteristic. इसका एक unique है कि half fresh water and half saline है. Western part is fresh water fed by river Ili and other inflows, or eastern is saline due to less inflow and high evaporation. And it is separated by a narrow strait. Yes, there is a strait. As we all know, strait is something that connects two large water bodies, a small water body that connects two large water bodies. And then there is a small landmass that connects two big landmass. It is called isthmus, like isthmus of Panama. Okay, so it is separated by a narrow strait called Sargassic Peninsula. Okay, Sargassic Peninsula is a narrow strait. Major inflows can Ili River, largest है Karatal, Aksu, Lecce. So we have to remember these rivers. ये lie करते हैं कज़ाक में. Right? We don't have to remember exact location, but कज़ाक के हैं ये याद रखें. तो इली रिवर ओरिजिनेट होती है चाइना के जिनजियांग प्रोविंस में, which is a Islamic dominated province of China. Now, what are its importance? Vital for fishing, irrigation, and water supply. Obviously, supports unique biodiversity, including endemic fish, and key for agriculture in the surrounding region. Now, let us see this question. Which of the following Asian lakes are endorheic lake? Okay, Sawa Lake, Mill Lake, Tarthar Lake, and Balkash Lake. Answer here is only 1 and 4. So Sawa Lake and Balkash Lake are endorheic lake. Sawa Lake is endorheic basin located in Iraq near Euphrates River. Okay, so Sawa Lake, Iraq, Euphrates River. Lake has no inlet or outlet, but it draws water from the Euphrates through a system of joint cracks and fissures. ठीक है, कोई इनलेट और आउटलेट नहीं है, जॉइंट क्रैक और फिशर से बना हुआ है. Then Razaza Lake or Mill Lake, also known as Razaza Lake or Raza Lake, Arabic for salt lake, is located between Iraq's governorates of Anbar and Karbala. So it lies again in Iraq. Sawa is also in Iraq. Razaza or Mill Lake is also in Iraq. We have to remember that. It is the second largest lake in Iraq after Lake Tarthar. So Tarthar, the third option, is also lies in Iraq, and Buhayrat, it is also called as Buhayrat Tarthar, is an artificial lake opened in 1956. And Lake Balkash is one of the largest lakes in Asia, 15th largest in the world, and it is in Central Asia, as we all know, Kazakh, and is an endorheic basin. Now, the next news. IAEA officials to visit no nuclear site accessing plan. तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है IAEA क्या है? ये ईरान में होने वाला है वैसे, पर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. So IAEA is a world's leading intergovernmental organization for scientific and technical cooperation in nuclear field. Right? It promotes safe, secure, and peaceful use of nuclear science. Nuclear एनर्जी को यूज करने के लिए जो गवर्निंग बॉडी है जो देखता है कि वेदर इट इज बीइंग यूज्ड फॉर पीसफुल पर्पसेस और फॉर
मिलिट्री पर्पसेस वो सिक्योर करता है IAEA, राइट, especially for the compliance of global non-proliferation norms के लिए। तो IEA statute was approved on 23rd of October 1956 और पावर में आ गया था 1957। इसका हेडक्वार्टर we have to remember lies in Vienna, Austria। Agency has 178 member states reflecting its wide international mandate and credibility। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ जानने के लिए नहीं है। What is the headquarter, when it is formed and what is its purpose? What is the purpose? To secure safe and peaceful use of nuclear energy। तो अब इसका स्टेटस क्या है, ग्लोबल में रोल क्या है? तो ये ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है विद इन यूनाइटेड नेशन सिस्टम। ठीक है, ये ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है अंडर यूएस। इट रिपोर्ट्स टू यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल। ये दोनों को रिपोर्ट करता है टू यूएनजीए एंड यूएनएससी। It is popularly referred to as atoms for peace and development, right? Makes sense, atoms, atomic energy for peace and development के लिए use करना है within UN framework। And nuclear energy is not diverted to weapon purpose, ये ensure करेगा। It will make sure कि the nuclear energy is not diverted for weaponry purposes, right? Now institutional structure क्या है IEA का? Let's get to know that। The General Conference composed of all member states meets annually, very important, annually मिलते हैं to approve budgets and set general policies। तो board of governor होते हैं जिसमें 35 members होते हैं and they meet at least 5 times a year। What do they do? They approve safeguards, carry out statutory function, yes, visits पे जाते हैं in the nations to see whether they are using the nuclear energy for peaceful purpose or not, and they also appoint the director general। The secretariat is led by the Director General, handles the IAEA's daily operations। और क्या क्या फंक्शन ये है? It ensures nuclear technology is used solely for peaceful purposes। उसके अलावा क्या करेगा? मॉनिटरिंग करेगा, ऑन साइट इंस्पेक्शन करते हैं, यस, इंफॉर्मेशन एनालिसिस करेंगे और वेरीफाई करेंगे पीसफुल यूज के लिए। This safeguards serve as first line of defense under nuclear non-proliferation treaty। तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है टू adhere to the nuclear non-proliferation treaty के लिए। enhance capacity national regional international level पे, yes, and scientific cooperation and technical exchange। In India, why are some nuclear reactors kept IAEA safeguard while others are not? UPSC का क्वेश्चन है, try to attempt it। So some use uranium, other use thorium। Could be this one of the reason? Sound illogical, right? Some use imported uranium and others use domestic supply। Some are separated by foreign enterprises and others are operated by domestic enterprises। Some are state owned and some others are privately owned। 2020 का PYQ है, try to attempt it by yourself over here। इसका आंसर here would be B, right? Some use imported uranium and others use domestic supply। इसके लिए सेफगार्ड के बाहर है और जो imported है उनको हम सेफगार्ड के बाहर रखेंगे, जो डोमेस्टिक सप्लाईज वाले हैं उनको नहीं रख सकते। Another question on IAEA। IAEA बहुत important organization है because UPSC has been asking it multiple times, right? See again in 2018 they have asked in Indian context what is the implication of ratifying additional protocol with Indian Atomic Energy Agency। तो इसमें क्या civil nuclear reactors come under IAEA safeguards? So military installation come under inspection of IAEA। The country will have privilege to buy uranium from NSG and the country automatically becomes the member of NSG। ये तो indirectly automatically member नहीं बनता है NSG का of ratifying additional protocol। additional protocol basically कोई protocol को हम उसको follow कर रहे हैं जो additional था, तो शायद उससे हमें या तो privilege हो सकता है extra uranium buy करने का from NSG, this could be true, और military purpose के लिए भी हम शायद use करते हैं because civil के लिए तो already हम use कर रहे हैं, तो उसमें additional protocol का sense नहीं बनता, right? So let us see the answer। सॉरी, IAEA का एक ही पर्पस होता है रादर कि मिलिट्री इंस्टॉलेशंस में जो है उस पे इंस्पेक्शन करेंगे।
पर इसमें क्या है, सेफगार्ड की बात कर रहे थे, सॉरी। सो सिविल न्यूक्लियर रिएक्टर्स का मतलब आईएई सेफगार्ड्स 2, वो एक्स्ट्रा सपोर्ट देंगे, टेक्निकल असिस्टेंस भी मिलेगा इफ यू फॉलो द एडिशनल बाय रेटिफाइंग द एडिशनल प्रोटोकॉल, वो टेक्नोलॉजिकल एक्सचेंज में हेल्प करेंगे। सो दैट्स व्हाई आंसर हियर वुड बी ए। नाउ द नेक्स्ट न्यूज़, इनबिट्स न्यूज़ में था सभी न्यू इनबिट ट्रांजिशन नाउ, it is a bit blurrish, sorry for that, but it is regarding InvITs. So what is the InvITs? We have to study that. So about infrastructure investment trust, that is InvIT. It is a collective investment scheme similar to mutual fund, enables direct investment only. इसमें क्या होगा कि इंस्टीट्यूशन और जो इंडिविजुअल प्लेयर्स है वो इन्वेस्ट कर पाएंगे इन्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में एक इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स। तो उस प्रोजेक्ट का बाद में जो भी बेनिफिट होगा, लाइक आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, अगर वो रेंट पे जा रहे हैं तो रेंटल इनकम, और इफ दे आर सेलिंग इट एट व्हाटएवर कॉस्ट, तो उसका जो बेनिफिट है वो सीधा इधर आएगा, right, to the individual. ये scheme लिखा है so that individual people can also invest in it. They are like mutual fund in structure which can establish a trust and registered with SEBI. इसका चार पार्टीज होते हैं, mainly the trustee, the sponsors, the investment manager and the project manager. While the trustee certified by SEBI has the responsibility of inspecting the performance of the InvIT, sponsor are the promoters of the company that set up the InvIT. तो sponsor basically वो होते हैं जो सेटअप कर रहे हैं InvIT को, फंड को, राइट, एंड उस पे नजर रखने का काम ट्रस्टी का होता है कि इंस्पेक्ट करेगा द परफॉर्मेंस ऑफ द InvIT फंड। ठीक है, along with InvITs there is another term called as real estate investment trust, that is REITs, are the companies that own or finance income producing real estate. इसमें हम इनकम प्रोड्यूसिंग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, नॉट इन द इंफ्रास्ट्रक्चरल फंड, बनने पे नहीं कर रहे, बनने के बाद वाले पे कर रहे हैं, उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। It allows investors to pool their funds and invest in various real estate projects. Essentially it functions like a mutual fund for real estate. ये particularly सिर्फ real estate के लिए, that is residential and commercial buildings के लिए, उसी में इन्वेस्ट करेगा मोस्टली। और जो पीछे वाला इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट फंड है वो अदर इंफ्रास्ट्रक्चर्स में भी कर सकता है, लाइक ब्रिजेस, रोड्स एंड अदर प्रोजेक्ट्स, राइट, लेकिन ये पर्टिकुलरली रियल एस्टेट के लिए है। दिस ट्रस्ट ओन एंड ओवरसी अ पोर्टफोलियो ऑफ इनकम जनरेटिंग प्रॉपर्टीज सच एज ऑफिसेज, बिल्डिंग्स, होटल्स, शॉपिंग मॉल्स एक्सेट्रा। Unlike real estate company, a REIT does not develop real estate properties, right? ये डेवलप नहीं करेगा to resell them, instead REIT buys and develops property primarily to operate them as its own investment portfolio. तो REITs में ऐसा होगा कि if you are investing in it, तो ये इस पर्पस से डेवलप नहीं कर रहा है उस प्रॉपर्टी को to resell it in future, वो इसलिए बना रहा है ताकि वो उससे बिजनेस कर सके बेसिकली, ठीक है, to do the business primarily to operate them as its own portfolio investment, right? So basically क्या रेंटल इनकम हो गया, मॉल्स बना दिए, मॉल्स में रेंटल इनकम हो गया, दैट इज कमर्शियल बिल्डिंग, राइट, एंड ऑफिसेस हो गया, होटल्स हो गया, ये सब इन्वेस्टमेंट होगा सो दैट बाद में बिजनेस कर सके उस। When investor invest in REIT, they become fractional owners of the property. Obviously, invest कर रहे REIT में तो they become fractional owners of the property equivalent to the amount they have invested. Most REITs are publicly traded like stocks. Obviously इसको तो उसको highly liquid बना देता है, unlike traditional real estate investment. तो आप इसको ट्रेड भी कर सकते हो in future, like शेयर मार्केट में सब ट्रेड करते हो, वैसे ही जो ये ट्रस्ट है ये भी शेयर मार्केट में ट्रेड होता है like stocks, and you can trade them कि आपको urgently liquidity की जरूरत है, you have to get out with this investment, और अपना जो भी वैल्यूएशन है तभी का उसके हिसाब से स्टॉक सेल करके you can get your money back, right? So REITs in India were introduced in 2014 and it is regulated by SEBI. Very important, REITs 14 में आया and regulated by SEBI. For a company to qualify as a REIT, following criteria. So there are 4 criteria. 90% of the income must be distributed to the investors, obviously, in the form of dividends. जो भी income आएगा आपको distribute करना है investors को in the form of dividends. 80% of the investment must be made in the properties that are capable of generating revenues. आप ऐसे नहीं कि डेट कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर रहे हो,
80% इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज उन प्रॉपर्टीज में होना चाहिए जो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए केपेबल रहेगा. Only 10% of the total investment must be made in real estate under construction properties. तो ऑलरेडी जो कंस्ट्रक्टेड है आपको उसी में 90% पैसा लगाना है. Only 10% can be invested in under construction properties. The company must have an asset base of at least 500 crores. And REITs cannot invest in agricultural land or vacant land. Obviously, vacant land में तो कर नहीं सकते हैं because under construction में 10% है, remaining 90% is already constructed properties में होना चाहिए. और इसका at least 500 crore का corpus होना चाहिए. Right? Now, see this statement and try to answer. Again, PYQ of UPSC. Pause the video, read the question and try to answer it. Let's see. Interest income from the deposits in REITs distributed to their investor is exempted from tax, but dividend is taxable. Okay. Now see the second statement. InvITs are recognized as borrowers under सरफासी एक्ट ऑफ 2002. अब मुझे ये बताइए जो इंटरेस्ट का इनकम जो जनरेट हो रहा है क्या उसको टैक्स से एग्जेम्प्ट करेगी सरकार? डिविडेंड को शायद एक बार कर देगी बट इनकम को नहीं करेगी. इंटरेस्ट की इनकम पे कभी भी नॉन टैक्सेबल नहीं होगा. तो फर्स्ट स्टेटमेंट गेट्स एलिमिनेटेड. सो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. यही एक ऑप्शन बचता है. जब इस टाइप के क्वेश्चन आए थे इन 23 और 24 फॉर द फर्स्ट टाइम, everyone started saying कि UPSC has eliminated the elimination rule, right? But it's very wrong, right? क्योंकि इस स्टेटमेंट बोल रहा है कि दोनों करेक्ट है, इसमें बोल रहा है दोनों करेक्ट है, इसमें बोल रहा है 1 is correct 2 is not correct और इसमें 1 is incorrect and 2 is correct. तो हमें पता चले ये तो इनकरेक्ट और डायरेक्ट आंसर मिल रहा है. We don't even have to think about the other 3 options in this case. They were just trying to make it complicated to look, but वो actually complicated नहीं था, right? Now the next news. Rare blue pink gill or shuttlecock mushrooms were spotted in Telangana forest. तो हमें जानना है स्पीशीज के बारे में जो ऐसा दिखता है. That is rare blue pink gill भी बोला जाता है, blue pink gill और shuttlecock mushroom because it looks like a bit of shuttlecock, right? Shuttlecock ऐसा होता है मतलब if it ऐसा and then there are feathers, right? तो इसको इन्वर्टेड फॉर्म में देखेंगे तो वो वैसे दिख रहा है, राइट? समथिंग, राइट? सो इट इज आल्सो कॉल्ड एज shuttlecock mushroom. So let us read about it. What is blue pink gill mushroom or shuttlecock? It is a sky blue color mushroom, obviously. जिसका साइंटिफिक नेम है Endoloma hostisteria. इसका genus of mushroom है and has pink to purplish hues in their gills. इसके लिए वो पिंक गिल भी बोला जाता है, ब्लू पिंक गिल, because it has pink से purplish hues in their gills. It is a species native to New Zealand. Yes, very important. न्यूजीलैंड के नेटिव है एंड ये उनके कंट्री के $50 के नोट पे भी दिखाया गया है. So appearance of blue pink gill mushroom. It is a vivid blue mushroom. Its color derived from rare azulene pigment. They have caps that can be flat or funnel shaped. इसके इनको shuttlecock भी बोला जाता है. They spore print in typical pink to salmon colored, which helps in identification. Habitat क्या है? Forest across New Zealand में मिला जाता है. Where it grows in ground between later in the broadleaf forest. It appears during the monsoon. As अभी अगर बोल रहे कि तेलंगाना में दिखा गया है और आंध्र प्रदेश wherever. One second. It is seen in Telangana, right? So और ये mostly monsoon के टाइम पे आता है. Yes, इंडिया में भी अभी monsoon चल रहा है तो अभी डिटेक्ट हुआ है. So let us see a question regarding it. It is blue in color due to presence of azulene pigment. Yes, it is true. It is endemic to New Zealand and featured in judges $50 note. Yes, true. Its spore content typically pink to salmon color, aiding identification. Again, true. All 3 statements are correct over here. Right? All 3 statements are correct over here. Now this is the last news. Notice to religious bodies over tiger reserves encroachment. So recently नोटिस दिया गया था बेलीगिरी रंगा टेंपल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में या टाइगर रिजर्व में टू द बिजनेसेस एंड द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन क्योंकि उन्होंने एनक्रोच किया था फॉर टाइगर रिजर्व के एरिया पे. तो वो एनक्रोचमेंट के अगेंस्ट सबको नोटिस भेजा गया है बाय द कोर्ट्स.
राइट। सो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है इस न्यूज से? नोटिस इंपॉर्टेंट नहीं है, एनक्रोचमेंट। एनक्रोचमेंट का आप पॉइंट यूज कर सकते हो इन योर एनवायरमेंट का टॉपिक ऑफ पेपर 3 इन योर मेंस, जहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या प्रोटेक्टेड एरियाज है उन पे क्या हार्म हो रहा है या व्हाट आर द इश्यूज, तो वन ऑफ देम इज एनक्रोचमेंट वाला by the private players for luxury resorts, spas and everything in the reserve forest area, right? तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है बिलीगिरी रंगस्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व। तो ये कहाँ है, किधर है, what are its properties, what are other features, we have to read about them. So it is in BR Hills, इसको BRT भी बोलते हैं, बिलीगिरी रंगस्वामी टेम्पल in चामराजनगर district of Karnataka. Very important, BRT lies in Karnataka. It is a unique biogeographical habitat and it creates a bridge between Western Ghats and the Eastern Ghats. एक नीलगिरी है जो ब्रिज बनाता है वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स में, then there is another BRT and it also creates a bridge between the Western Ghat and Eastern Ghat. It was declared as Tiger Reserve in 2011, right? The reserve gets its name from Biligiri, meaning white rocky cliff. Biligiri means white rocky cliff, which is home to ancient Rangaswamy temple dedicated to Lord Vishnu. So we have to remember three things here. Biligiri, White Rocky Cliffs, Rangaswamy जो temple है, it is dedicated to Lord Vishnu, right? And ये जो temple it lies on this Biligiri, that is the on the cliff. It is also believed that the hill ranges gets its name due to white mist and silvery clouds which covers the lofty hills. Yes, क्योंकि white rocky cliff आ ही वहाँ से रहा है because there is no snow present in the Karnataka, right? But व्हाइट क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि व्हाइट मिस्ट एंड सिल्वरी क्लाउड्स की वजह से अपीयर्स व्हाइट, सो दैट्स व्हाई इट गेट्स इट्स नेम फ्रॉम दिस। देयर इज अ ट्राइबल कम्युनिटी, यस ऑफ कोर्स देयर वुड बी अ ट्राइब जो वहां रह रही होगी, वी हैव टू नो अबाउट द ट्राइब आल्सो कि कौन सी कम्युनिटी रह रही है। इट इज सोनिका ट्राइब एंड दिस आर द फर्स्ट ट्राइबल कम्युनिटी लिविंग इनसाइड अ टाइगर रिजर्व एंड गेटिंग देयर फॉरेस्ट राइट रिकॉग्नाइज्ड बाय अ कोर्ट। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है आपके लिए कि ये फर्स्ट ट्राइबल कम्युनिटी है जो टाइगर रिजर्व के अंदर रह रही है और जिनको फॉरेस्ट राइट्स रिकॉग्नाइज किया था कोर्ट में इन 2011। वेजिटेशन क्या है? स्क्रब्स, ड्राई डेसिडियस, मॉइस्ट डेसिडियस, शोला फॉरेस्ट एंड माउंटेन ग्रास। वैरायटी ऑफ स्पीशीज मिलते हैं। ड्राई एंड स्क्रब कहाँ होगा? जहाँ शैडो जोन होगा, राइट? जहाँ पे बारिश नहीं पहुंचती है वहाँ पे स्क्रब एंड ड्राई डेसिडियस रहेगा। मॉइस्ट डेसिडियस ऑब्वियसली जहाँ it would be in the zone of rainfall. Shola forest, unique feature of Nilgiri biosphere also, and BRT का भी है, and mountain grasslands. The major species include Agnosis latifolia, Dalbergia peninsular, Gruvia, Terminilla, Pederica. So these are few species, we don't have to remember them, but you have to remember it has a variety of forest species, right? Forest grassland types. So where it is located, let us see that. Nilgiri Rangaswamy, it is located in Karnataka over here, and Nilgiri is somewhere over here, right? And this is a unique place where Western Ghats here and the Eastern Ghats here it's connected. It's a bridge between them. So, read this question. So, Biligiri Ranga Hills or Tiger Reserve, it is located on the confluence of Western Ghat and Eastern Ghat. True. The first statement we all know it is a bridge between Western Ghat and Eastern Ghat. We have read about it. The reserve is part of Nilgiri Biosphere Reserve. No, we have particularly discussed कि उसका part में it is different from it, right? And the Sonika tribe, indigenous tribe, yes, we have read about it. So answer here would be B. So this was the last news from today's current affairs. We have covered n number of topics from places in news, right, to wildlife sanctuaries and parks, to species, right, और जो भी रिलेटेड न्यूज है उसके बारे में हमने जाना है.
So these were the important current affairs from today's point of view. कल फिर से back with 9:30 a.m. sharp. आज थोड़ा delay हो गया. I apologize from my side. But again from 9:30 morning sharp we will bring the current affairs at Mass Chandigarh IS. Myself Tarun. Keep studying, keep hustling. This is the time to keep working hard. Right? Thank you.